Every year, thousands of Hindus gather at Pahalgam for the artist's 4-day pilgrimage to Shiva's highest cave, where they wash away their sins. Amarnath Cave, a Hindu shrine, is situated at an altitude of 13,500 feet, about 141 kilometers from Srinagar, where God Shiva is said to dwell. The shrine forms an important part of Hinduism and is considered to be one of the holiest shrines. The cave is surrounded by snowy mountains and is covered with snow most of the year, except for a short period of time in summer when it is open for pilgrims. Thousands of Hindu devotees make an annual pilgrimage to the Amarnath cave on challenging mountainous terrain to see an ice stalagmite formed inside the cave. They believe that strenuous journey such as this converts them of the sins of mortal life. Devotees travel on foot either from Srinagar or from Pahalgam. The 46-kilometer journey from Pahalgam to cave takes approximately 3 days. The shorter northern route via Baltal is just about 14 kilometers long, but has a very steep gradient and is quite difficult to climb. It starts from Baltal and passes through Domail, Barari and Sangam to reach the cave. The Baltal route is along the Amarnath Valley, and all along the route one can see the river Amravati, a tributary of Chenab, which originates from Amarnath Glacier. The government of Jammu and Kashmir makes all arrangements for the comfort of the pilgrims for undertaking the ritualistic journey for visiting the shrine on Shravan Purnima. There is bus service from Jammu to Pahalgam. At Pahalgam, the pilgrims arrange for coolies or ponies to carry gear of food and clothes, etc. This year, the yatra commenced on 2nd of July and will end after 48 days on 18th of August. Helicopter services from base camp to Panchtarani are also available from various private operators. Every year, thousands of central police and state police personnel are deployed to provide security to pilgrims from potential terror threats. The anticipated threats are laying and exploding IEDs along the yatra routes, lobbing of grenades particularly in the built-up areas, suicidal attacks on camps, exploding explosive-laden vehicles discreetly parked on the roads or ramming through the camps or against convoys, indiscriminate firing on camps and moving columns, sniping from dominating heights overlooking the yatra routes and camps. The forces position at various halls and also in the perimeter of the shrine. Border Security Force has been entrusted the responsibility of security of Amarnath Yatra for last many years, along with other central police forces and state police. This year, BSF troops established its Adam base at Baltal and Chandanwari on 12th of June, well before the commencement of Yatra. The deployment of BSF companies started on 18th of June and completed by 21st of June. 24 BSF companies have been deployed on Pahalgam and Baltal axis. Besides, 10 MMG detachments are also deployed on Amarnath Yatra. Shri K.K. Sharma, Director General BSF, along with Shri Vikas Chandra, IG BSF, Kashmir Frontier, visited BSF camps at Baltal, Panjtarni and Holy Cave on 28th of June to review the security arrangements. Salute! हम
पहलगाम के सर्किट रोड में बीएसएफ की कंपनी डिप्लॉय है, वहाँ पर हैं। ये अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को सर्किट रोड पर सुरक्षा प्रदान करती है। पहलगाम से लेकर के केप तक बीएसएफ की 2 बटालियन डिप्लॉय हैं जो कि यात्रियों को सुरक्षा देती हैं। पहलगाम में ये पहली कंपनी है जो डिप्लॉय है। इसके बारे में आगे की जानकारी श्री अजीत आर, जो कंपनी कमांडर हैं यहाँ पर, वो देंगे। इस इलाका में 129 बटालियन बीएसएफ का अल्फा कंपनी डिप्लॉयड है, जो कि एडॉक J1 बटालियन का ऑपरेशन कंट्रोल में है। हम हमारे जिम्मेदारी के इलाका सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आरओपी और पेट्रोलिंग दिया डोमिनेट करता है। इसके अलावा मेरा कंपनी लोकेशन में फ्रंटियर बीडी टीम का एक डेटाबेस मौजूद है। उसके बारे में जानकारी फ्रंटियर बीडी टीम ओसी श्री राकेश पांडे देगा। फ्रंटियर बीडी टीम 129 अल्फा कंपनी के साथ सर्किट रोड पहलगाम में डिप्लॉय है। इसकी जिम्मेदारी सवेरे आरओपी लगाते समय एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को सैनिटाइज करना है। इसके अलावा पहलगाम से लेकर के केप तक के रूट में कोई भी आईडी या विस्फोटक सामग्री मिलने पर उसको निष्क्रिय करने की जिम्मेदारी भी फ्रंटियर बीडी टीम की है और इसके लिए जरूरी सामान हमारे पास उपलब्ध है। जय श्रीमान, जय हिंद। एक वॉइस ऑफ आरओपी पार्टी जाने के तैयार है श्रीमान। ठीक है, जय श्रीमान, जय हिंद। आरओपी पार्टी विश्राम जाने को तैयार हो। आरोपी का काम यात्रियों की सुरक्षा करना, ट्रैक की सुरक्षा करना, ट्रैक के द्वारा आने जाने वाले सप्लाई यानी कि राशन आदि स्टोर्स को सुरक्षा प्रदान करना और अपने जिम्मेदारी के इलाके में होने वाले किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। हमारी कंपनी का जिम्मेदारी का इलाका टोटल इलाका 4500 मीटर। हमारी कंपनी के डिप्लॉयमेंट के बाईं तरफ यानी कि टिश्यू टॉप की तरफ 2000 मीटर और हमारी दाहिनी तरफ यानी कि नागाकोटी और शेषनाग की तरफ 2500 मीटर। सबसे पहले डीएसएमडी पार्टी डीएसएमडी लेकर सुबह पूरा ट्रैक चेक करेगी। उसके बाद डॉग स्पॉट जाकर पूरा ट्रैक की जांच करेगा और आपको अगर कोई भी संदिग्ध आदमी नजर आता है तो आप उसका भी ध्यान रखेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि आप लोगों को ट्रिगर हैप्पी गोली चलाने वाली खोज नहीं होना है। हमारे सिविलियंस के सामने हमारी बीएसएफ की छवि है, वो बहुत ही आला दर्जे की है। उस छवि को हमेशा बनाए रखना है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा बीएसएफ का क्राउड है, जिसको हमने कई सालों से बिल्कुल क्राउड फ्री इंसिडेंट के हमने यहाँ पे कराया है। सभी सिविल बलों के सामने जो सीमा सुरक्षा बल की छवि है, उसको क्या बनाए रखोगे? बनाए रखोगे? चलने को तैयार हो? सावधान। कभी ना हथियार और अम्युनिशन वगैरह चेक किया? चेक के लिए एक्स्ट्रा बैटरी लिया? नाश्ता वगैरह किया? बीडी टीम डीएसएमडी का बैटरी वगैरह चेक किया? चलो और सुनो, अभी बहुत इंफॉर्मेशन आ रहा है, मिलिटेंट आईडी वगैरह लगाने का भी चांस है। ठीक है, यहाँ आप लोग जाएगा प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है। हर आरओपी पार्टी के बीच में मिनिमम 20 मीटर का डिस्टेंस रखना है और जगह ऑक्यूपाई करने से पहले इलाका का थोड़ा सर्चिंग करना है। ठीक है, आरओपी पार्टी सावधान, मार्च ऑफ। To deal with perceived threats, Yatra route is regularly sanitized by road opening parties. The roads and area astride the routes is dominated by patrolling round the clock. Besides manual checking, the ROPs use deep search metal detectors and sniffer dogs for detecting IEDs. Dog squads are an integral part of security. They are employed for sanitization of Yatra routes, including campsites before commencement of Yatra. BSF has placed total 17 dog squads on both axes to locate the hidden IEDs en route. Besides, 2 bomb disposal squads are also placed on Baltal and Pahalgam axes to meet any eventuality.
to avoid grenade lobbing, sniper firing and rocket firing. Built-up areas and heights astride the routes are occupied and kept under domination. आराम से ले जाऊं Due to high treacherous journey and oxygen deficiency at high altitude, pilgrims suffer various ailments en route. Every year, more than 100 pilgrims die due to heart failure and other ailments. BSF always deploys its medical teams at various locations on both axes to provide medical assistance to needy pilgrims. This year, Force has set up 10 medical camps at Baltal, Sangam Top, Holy Cave, Panjatarni, Poshpatri, Mahagunesh Top, Vahabal, Sheshnag, Pisu Top and Chandanwari. ठीक है बाकी तो खास है तो बैठा के कर देता है इसको अच्छा इनको सांस प्रॉब्लम है पहले से आपको आज वो लेकर नहीं है पंप जो लाइन अरे अपने पास इनहेलर भी है ना क्यों इनको दे दो. During Yatra, BSF has also focused its role towards medical aid, which is as essential as security. BSF has deployed 10 medical officers assisted by paramedical staff, mobile teams with medicines and equipments at critical points. The role of BSF medical staff was highly appreciated by the pilgrims. A total of 35,009 yatris were treated on both the axes by BSF doctors and paramedical staff during Sri Amarnath Ji Yatra 2015. 76 क्या है तो 76 क्या है तो 76 प्लीज carry on. डाउन मत है डाउन मत है कुछ ओके डियर You are not clear. ऊपर की बुलाई थल्ले थे हम आइंदा के थल्ला बनाया भाई डाउन है It is believed that Lord Shiva left Nandi, the bull, at Pahalgam, Belgaum. At Chandanwari, he released the moon from his hair. On the banks of Lake Sheshnag, he released his snakes. At Mahagunas Parvat, he left his son Lord Ganesha. At Panjatarani, Lord Shiva left behind the 5 elements earth, water, air, fire and sky. As a symbol of sacrificing the earthly world, Lord Shiva performed the Tandava dance. Then finally, Lord Shiva entered the holy Amarnath cave along with Parvati. Sri Amarnath Ji Yatra has been a challenge with a difference, in which both security and service are to be amalgamated. BSF, by virtue of its assimilation with border population, do not face any problem in carrying out the security duty in Sri Amarnath Yatra by providing route security, medical assistance and other services.
Inside the 40-meter-high Amarnath cave, the stalagmite is formed due to freezing of water drops that fall from the roof of the cave onto the floor and grows up vertically from the cave floor. It is considered to be a Shiva Linga by Hindus. The cave waxes during May to August as snow melts in the Himalayas above the cave, and the resultant water seeps into the rocks that form the cave and gradually wanes thereafter. According to a Hindu legend, this is the cave where Shiva explained the secret of life and eternity to his divine consort Parvati. Two other ice formations represent Parvati and Shiva's son Ganesha. There are references to the legendary king Aryaraja 300 BCE who used to worship a lingam formed of ice in Kashmir. It is believed that after the Middle Ages, this cave was forgotten by people before it was discovered by a shepherd in the 15th century once again. To the people of many faiths, mountaintops seems the symbol of spiritual achievement. The Hindu has something in common with the religions of all the world when he feels that here he can shed his faults and begin his life anew. Now, at last, the summit draws near. The end of weary climb is in sight. Here, at last, the pilgrims can look on the Shiva's ice cave. ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है।